लुगदी, कागज़, पैकेजिंग और संबद्ध उद्योगों के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यापक मंच पेपरएक्स 2025 का 17वां संस्करण आज द्वारका के यशोभूमि में शुरू हुआ। इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इस संस्करण में 28 देशों के 675 प्रमुख प्रदर्शक शामिल हुए और 33,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों का स्वागत किया गया, जिसने भारत के तेज़ी से बढ़ते कागज़ बाजार के प्रवेश द्वार के रूप में पेपरएक्स की भूमिका को मजबूत किया। ये 4 दिवसीय आयोजन इंडिया एग्रो एंड रिसाइकल्ड पेपर मिल्स एसोसिएशन के सहयोग से और वर्ल्ड पेपर फोरम के समर्थन से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक नेताओं, प्रौद्योगिकों, नवप्रवर्तकों, निर्माताओं और नीति निर्माताओं को एकजुट करना है ताकि टिकाऊ और प्रौद्योगिकी संचालित कागज़ उत्पादन के भविष्य को आकार दिया जा सके। इंडस्ट्रीज फिर भी आगे पिछड़ रही है, क्या कहेंगे? As an industry, we are still the fastest growing industry in the world. In paper अगर देखा जाए वर्ल्ड ओवर, इंडिया की 13.5% से ग्रोथ हो रही है एनुअली पेपर इंडस्ट्री में। ऑफ कोर्स जो बताया गया, आपने सुना कि 700 से 900 इंडस्ट्री से आज 200 इंडस्ट्रीज पेपर मिल्स बंद पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी डिसीजंस अराउंड दैट व्हिच वी नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे आपने जीएसटी का इम्पोर्टेड जीएसटी का सुना और जो डंपिंग हो रहा है उसका सुना। सो वी हैव टू बी मोर कॉम्पिटिटिव। इसमें थोड़ा हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा। देखिए लग्जरी है, मानती है गवर्नमेंट या पेपर को लग्जरी मानती है कि उसमें 18% 12%, क्योंकि उसकी चीज़ें बनती है वो 0% पे है, जो एजुकेशन पे आती क्या है। सो आई थिंक डेफिनेटली ये कुछ हुआ है उनसे, गवर्नमेंट से मिस हुआ है बिकॉज आई थिंक डेफिनेटली पेपर इंडस्ट्री इज नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट, एज यू नो इट्स बेसिक प्रोडक्ट। पेपर इज यूज इन एवरीथिंग, सो आई एम श्योर दिस विल बी एंड दे कीप रिव्यूइंग इट। सो हमारा गुंजाइश है गवर्नमेंट से, जब भी अभी नया रिव्यू होगा जीएसटी का, उसमें डेफिनेटली पेपर इंडस्ट्री को वो बेनिफिट दिया, पास ऑन किया जाए। जैसे आज पेपर प्रोडक्ट जो 0% पे है या 5% पे है, पेपर जो ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल है उसको 18% रख के कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज वो बड़ा लॉस है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। और इंडियन पेपर को भी कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उसका सपोर्ट होगा अगर वो जीएसटी रेट कम आ जाए तो। इंडस्ट्री में यहाँ पे नया क्या फोकस क्या है? नया यहाँ पे फोकस किस पे बेसिक इन द शो में डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज पे है। टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे इसको पेपर को कैसे मोर सस्टेनेबल बनाया जाए, मोर एफिशिएंट बनाया जाए, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, टाइमिंग कम हो और एक इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए वर्ल्ड ओवर के लिए। दैट्स द फोकस। ठीक है। How do I see? I think the only thing that we can know is that everything has become very unpredictable. 10 years ago, we used to have good time, we used to have bad time, and we used to have average time. Now, the industry will cut off bad time and some good time. There's no average time left in this industry. I mean, in last 6 months also, the volatility of the industry is phenomenal. So, the new global scenario is volatility. The new global scenario is times which are unprecedented. You will hear the overseas people dumping, all those challenges coming in this industry, and the industry leaders here would be representing to government, trying to sustain this industry. So that is going to be a new normal. Because thank you so much. Good morning, friends. Good morning. I see dignitaries on the dais and dignitaries of the dais. Our chief guest Pavanji, today my dear friend, guest of honor Michael, and ladies and gentlemen. When Rahul started off with bad times and good times, I thought, oh my God, some of my content has already been spelled out now. But Rahul, I would like to differ a little bit over here. There are no bad times and no good times. With my experience, I would say there are comfortable times and there are tough times. We have seen comfortable times in the past. We have seen equally bad times in the past. Don't forget about COVID time. Paper production and his vision and expertise have set a new benchmark for sustainability and growth in the sector. I request Mr. Agrawal, President IARPMA, to welcome him by presenting a short, and I request our chief guest, Mr. Paperex, to present the honor of the Indian paper industry to Mr. Gopalaratnam. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for the stellar career of Mr. Gopalaratnam. I request Mr. Gopalaratnam to kindly share a few words.
I request Mr. Gopalaratnam to join me on the dais to say a few words. A very good morning to all of you. It has been a great privilege and pleasure to be here today to receive this award. And I have been in the industry for more than 50 years, and I have seen from 1970 how the industry has been developing. The industry was largely benefited by the government rule then on what we call as unconventional paper making from non-conventional raw materials. It is the one that brought huge amount of investment into the industry, and that is what really made this Agro association a big name started. I think over a period of time, a lot of things have changed. These plantations of wood to meet nearly 99% of our requirements is another huge hallmark for the Indian paper industry. Of course, we know that the cost of the raw material is not any cheap, any less expensive, or actually it is creating a huge problem of international competitiveness. Nevertheless, this achievement in this country is nothing, no country has achieved what India has achieved in the field of tree farming, tree generation, and meeting nearly 99% of our raw material requirements for wood. This way, I think there has been huge amount of progress. The circularity is something that may have come only now, but the paper industry has achieved it since many decades ago with this. For example, in SPB, in our company we achieved what is known as a circularity between a sugar mill, a paper mill, agricultural society, raising sugarcane. All this happens in one place, in one roof, and that is there for the last 40 years. Therefore, I think India has been a great place of growth in both production as well as in technology. Of course, we know that our per capita is low at about between 60 kgs, but that only gives us a lot of hope that there is still a lot of headroom for us to grow despite a very weak market that we presently face. And I am fully confident and hopeful that these problems will be tackled by the Indian scientists locally and solutions found, which will go a long way in boosting the prospects of In the Indian pulp and paper industry with over 5 decades of leadership, he was a champion of green business practices. He played a key role in industry bodies, including as president of IEPA and chairman of Paper Tech. He significantly advanced paper industry's technological and sustainable practicing, leaving a lasting legacy of innovation and excellence. A huge round of applause, ladies and gentlemen, as we remember Mr. Kafi Viswanathan. भारत और विश्व के पेपर एवं संबद्ध उद्योगों से जुड़े सभी विशिष्ट प्रतिनिधि, प्रदर्शक और निश्चित आयोजन में आप सभी को संबोधित करना मेरे लिए एक अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके बीच उपस्थित होना चाहता था, लेकिन संसद के जारी शीतकालीन सत्र के कारण आज मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे जुड़ा रहा हूं। फिर भी इस आयोजन की ऊर्जा, गरिमा और नवाचार की भावना को मैं पूर्ण रूप से अनुभव कर पाऊं। यह मंच वैश्विक पेपर उद्योग का धड़कता हुआ केंद्र बन चुका है, जहां विचार, तकनीक, नेतृत्व और सहयोग एकजुट होते हैं। आज जब विश्व के अनेक उद्योग आर्थिक अनिश्चितताओं से गुजर रहे हैं, भारतीय पेपर उद्योग दृढ़ता, अनुकूलन क्षमता और सतत विकास का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यह क्षेत्र केवल उत्पादन और विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि गुणवत्ता सुधार, नवाचार, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है।
ऊर्जा, जल और कच्चे माल के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे प्रयास पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से जुड़े होने के नाते मुझे विशेष संतोष है कि पेपर उद्योग ने परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड अर्थात पैट योजना के अंतर्गत निर्धारित ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को उत्कृष्ट रूप से प्राप्त किया है और कई मामलों में उनसे आगे बढ़कर प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि उद्योग आर्थिक वृद्धि और ऊर्जा संरक्षण दोनों को समान प्राथमिकता देता है। मुझे विश्वास है कि आगामी CCTS ढांचे में भी यह उद्योग श्रेष्ठता की नई मिसाल कायम करेगा। गुणवत्ता देश पेपर में भी बहुत फाइबर शॉर्टेज है क्योंकि हमारा कलेक्शन ही नहीं है। जैसे डेवलप कंट्री जापान में जितना यूज करते हैं 90% कलेक्ट कर लेते हैं, केवल टिश्यू उनका टॉयलेट में जाता है जो टिश्यू वेस्ट है। तो हमें एक मैसेज देने की जरूरत है कि एक हमारा चाहे सेक्रेटरी डिपो हो, चाहे पान का डिपो, मिठाई का डिपो हो, तो फाइबर कलेक्शन की जरूरत है। जो फाइबर कलेक्शन में 50%, उसके अलावा हमें 1 मिलियन 10 मिलियन टन इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो देश को मैसेज देने की जरूरत है, पब्लिक को देने की जरूरत है कि फाइबर इकट्ठा करें, इम्पोर्ट से बचें और गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे साथ है। Manufacturers Association and also Chairman and Managing Director of Many Papers Limited. Good afternoon, you all, and welcome to this great show, Paperex 70th edition. भाई काफ़ी भी बताया गया, मैं थोड़ा सा पेपर इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा. So you see, paper industry is one of those very few industries on this planet which can boast of this kind of sustainability. We all have been talking about sustainability in all industries. But paper industry is really winning the race. I have been 30 years, it has been 30 years for me into paper industry. For the last 2 years, 3 years, we are seeing for the first time the kind of recognition which this industry is getting now. And why is that? Because of our sustainability aspect, because of our environmental friendliness aspect. And what is that? In sustainability, we are using only 3 kinds of raw material in India today. One is wood. The other one is agricultural residue, that is bagasse and wheat straw, and the third one is recovered fiber. These are the 3 raw materials. Coming one by one to each of these 3, wood is 100% grown by farmers in their agricultural fields. We are not allowed to cut a single tree from a forest. It's totally banned. 100% wood is being procured from the field, agricultural fields. These trees are grown by farmers. These trees are not cut. These trees are harvested, and these are eucalyptus, poplar, casuarina, so several kinds of varieties. Moreover, we have paper industry has worked so hard in the last 10 years to develop new clones for these trees, and the biggest advantage of these clones are these are fast-growing trees. And number 2, water consumption is very low, even lower than the conventional crops. So today, farmers are able to harvest their tree crops within 3.5 to 4.5 years. And this is in public domain that in the last 5 years, farmers' income has grown tremendously by planting these trees. That is number 1. And today the percentage, as was told, it is around, I think the percentage with wood-based paper is close to 21-22%. And then comes agricultural residue. Again, look at wheat straw. When Pramodji told that it was a big problem. This was getting burnt in the fields. पानी की जलने की समस्या, तमाम pollution होता है. We are natural scavengers. We are consuming all the waste being generated, agricultural waste, agricultural residue, and converting that into paper. Look at the sustainability aspect. And the third one, recovered fiber. Today, the recovered fiber rate is less than 50% in India, whereas in developed economies, it is more than 75%. So paper industry is working very hard, talking to various NGOs, working with NGOs, so as to increase this percentage and take care of our fiber requirement also simultaneously. So look at these 3 raw materials. These are coming from sustainable sources. These are biodegradable, biocompostable, totally recyclable, that means 100% environmentally friendly. And now come to the products. Whatever products we are making
They are totally biodegradable, biocompostable and 7 to 12 times recyclable. Friends, can you think of any other industry on this planet which can boast of both these things? Our raw materials are sustainable and environmentally friendly. Our products are sustainable and environmentally friendly. That is why today everybody is saying that paper is a technically viable, economically feasible, environmentally friendly alternative to single use. Social media and lovely words. I really appreciate that. Just a few words on Informa Markets. For those of you who don't know us, Paperex is the world's largest paper show, and Informa Markets is the world's largest exhibition or show organizer. We are organising some 600 plus exhibitions like this all over the world, from China all the way through to South America. Our business is growing, a bit like this industry is growing. And we, earlier this year, invested in buying Hive India, that was the previous owner of Paperex. And we bought the business because we are buying growth. This event is growing, and Informa is a London FTSE 100 PLC, and we invested in buying Hive India in order to become the new owners of Paperex. It's a very exciting opportunity for our company. We're very much interested anyway in growing our business in India. We're in 16 different sectors. We're very interested in the growth dynamics of this industry, and we really truly believe that we can bring our international resources to bear on helping this event and the industry grow in India. We have resources all over the world. We have 14,000 colleagues in 30 different countries. And now as Paperex is part of a bigger group exhibition company, Informa, we hope to be able to really support the growth of this event moving forward. So very happy to be here at our first Paperex, the 17th edition, but it's Informa's first edition. I think all the industry leaders are sitting here, and we can't even imagine the largest gathering of industry leaders, paper industry of markets. This is what the purpose. You all have heard about the priority, the challenges, what the industry is facing, what we need, and of course about Paperex. So you might have heard about notes and stats. So we have heard about the stats at the moment. Officially consumption is 50 kilograms. And why this Paperex? So simple answer is, if we simply have to move our per capita consumption from 50 kilograms to 60 kilograms, so industry needs 1 lakh tons of paper. So just to generate the paper, industry needs raw material, technology, machinery, and paper is the platform where we find a unified platform for capacity, where people can get the machines, technology, raw material, and place where people can, industry can find a new export and destination. So this is the platform that we are creating, and over the year, as all of us has agreed, this is no more a show, this is business festival of the paper industry. And of course, we'll be continuing with the regional extension in next year. And next year we are planning to have more features in the show, targeting tissue and paper converting. So you will see more dimension, more program, more branch in the show next year onwards. And also a lot of biomass is generated as waste as well. And industry has taken strong steps forward to convert that waste into energy. So we are not competing directly with the bioenergy industry, but we are creating our own energy from our waste to be consumed in-house. So we are in fact offsetting the need for buying power from the state government or other energy sources, and that is why we are lightening the load on those segments and creating our own energy. On the other aspect of raw material security, so the location of mills is so widespread. They are in connect with their farmers and aggregators at their level to create the rightful resources for both agro and wood or recycled fiber, as the case may be,
and create their own sources of raw material supply. I think that intervention with government on wood is very, very low, because wood, what is being cut is through social forestry means, not through forests. I think Pavanji earlier very clearly mentioned we are not cutting wood per se from forests, but we are harvesting wood created by the farming network and using that in our paper. वहाँ पर सबसे ज्यादा हमारी पेपर मिल्स में बॉयलर्स लगे हैं, जो बॉयलर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है पेपर इंडस्ट्री ने। एक बॉयलर में 50 करोड़ से लेके 150-200 करोड़ तक एक इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट किया है। वहाँ पे पावर बॉयलर्स लगाए हैं और वो पराली को 100% यूज करते हैं, नॉट दैट मच ओनली। वो पराली को बेल्स पे लेते हैं और उसको स्टॉक भी करते हैं। पराली कितने दिन आती है? पराली 1 महीना आती है, 1.5 महीना आती है, बाकी 10.5 महीने क्या करेंगे? एक साल के लिए स्टॉक करते हैं। So look at the efforts being done by paper industry over there. एक चीज और, पराली से पेपर भी बन सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत इंफीरियर होती है। हम लोग लगातार ये रिसर्च कर रहे हैं कि अपने पेपर मेकिंग में, पल्प मेकिंग में, वहाँ पराली भी हम कुछ यूज कर सकते हैं क्या? That work is also going on. Maybe we get some results. But as a fuel हम लोग यूज कर रहे हैं। और जहाँ तक किसानों के जलाने की बात है, किसान का कुछ ही आइडिया उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हम इसे जलाएंगे, उसकी राख बनेगी, भूमि गर्म होगी, पैदा ज़्यादा होगी। जो मिक्स जो चला रहा उस कारण जलाई जाए। ऑन द साइड जाके 3 रुपये किलो खरीदते हैं, वही रोल बनाते हैं, वी आर पेइंग 3 रुपये के लिए रोल बनाते हैं, हासिल करते हैं। अगर किसी को साइड पर 3 रुपये क्यों मिले हैं, 3 रुपये पर कहीं दे रहे हैं, वो जलाना क्यों चाहता है? तो इस बार जलाने का मैं मानता हूँ पेपर के द्वारा जो लिखा गया, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा नहीं जली, बहुत कम जली। जैसे 100% जल्दी, तो इस बार 20% जली। धीरे धीरे किसानों की समझ में हो आएगा तो ये भी ठीक हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल ये आप पराली वाली समस्या जो है, आप ये मान के चलिए कि इट हैज रिड्यूस्ड ट्रेमेंडसली बिकॉज ऑफ द बर्निंग। वो अब इशू नहीं है। जो भी अगर इशू है दिल्ली एनसीआर में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, यू हैव टू लुक एट द अदर इशूज। खाली पराली अब नहीं रह गए, तो वो हम लोग देखते हैं पेपर इंडस्ट्री हम लोग काफी पराली यूज कर रहे हैं।